हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सीडीएस 2023 का हम पेपर सोल्यूशन कर रहे थे मैथ्स का, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। यदि आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर सिलेक्शन क्लासेस सर्च करिए और आपको सीडीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? 7th क्वेश्चन पे हम थे। 3 पर्सन ABC कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 36 डेज। ठीक है, तो आई कैन से A प्लस B प्लस C। भाई तीनों की एफिशिएंसी मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं A प्लस B प्लस C। दे कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 36 डेज, नो प्रॉब्लम। मतलब ये टोटल वर्क हो गया। A and B together can do 5 times as much as work in C alone। मतलब A प्लस B जितना काम एक साथ कर सकते हैं वो C के 5 गुने के बराबर है। इसका मतलब A प्लस बी और C की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 5:1 आ जाएगा। एंड B एंड C टुगेदर कैन डू एज मच वर्क एज A अलोन। ठीक है, B प्लस C की जो एफिशिएंसी है वो A के बराबर है। इफ A एंड C टुगेदर कैन डू n टाइम्स एज मच एज वर्क, मतलब A प्लस, यदि हम C को देखते हैं वो n टाइम्स B के बराबर काम करता है, तो हमसे n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनका एफिशिएंसी का रेशियो देखते हैं, ये बोलता है कि A प्लस बी की वैल्यू 5C के बराबर है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि A प्लस बी की जो एफिशिएंसी और C की एफिशिएंसी का रेशियो 5 और 1 दे रखा है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है जिसको कार्य क्षमता बोलते हैं। और B प्लस C और A की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है, 1:1 है। तो आप एक चीज नोटिस करो, जो मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये भी एफिशिएंसी आएगी A प्लस बी प्लस सी की, और इनको प्लस करूंगा तो ये भी एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस सी की आएगी। तो यहाँ से जोड़ने पर 6 आ रहा है और यहाँ से जोड़ने पर 2 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 3 आदमी यदि मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी इक्वल आनी चाहिए, सम वाइज। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो हम दोनों तरफ इनका कॉमन नंबर बना लेते हैं। मतलब 1/1 को हम 1/1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं। उसके फायदा ये होगा कि अब यहाँ भी 6 हो गया और इनका भी 6 हो गया, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। क्या पता चलेगा कि A की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 1 है। तो फिर B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भाई तीनों की मिला के 6 है, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और 1 4, 2 आ जाएगी। तो ये हमको इनका एफिशिएंसी पता चल गया। ठीक है, तो अगर हम टोटल वर्क में इस एफिशिएंसी को वापस डालते हैं, मतलब A की जगह 3, B की जगह 2, C की जगह 1 और इंटू 36, तो टोटल वर्क हमारे पास जो करना है 36 और 3 दूनी 3 2 5 6, 36 इंटू 6, 216 कार्य करना है। कितना कार्य करना है? 216 कार्य करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बोलता है A प्लस बी A प्लस सी टुगेदर कितना काम कर पाएंगे। तो यदि मैं A प्लस सी को देखता हूँ किसके रेस्पेक्ट में? B के रेस्पेक्ट में। इनकी एफिशिएंसी जोड़ो जरा A प्लस सी की, 3 + 1, और B की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये कितने गुना हो गया? 2/1। तो मतलब जो n की वैल्यू है ये इनसे 2 गुना काम कर रहे हैं। n की वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 आएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो प्रोसीजर है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपने यदि नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप इसको सीख लीजिए। मैंने सिलेक्शन क्लासेस पर ये जो कंसेप्ट है इसको ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोलता है रेशियो कुछ दे रखा है आपको, इजी है वैसे, कि 2a/3 इक्वल्स टू 4b/5 इक्वल्स टू 3c/4। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है 18/a² प्लस c² - b²। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको k अज्यूम कर लेते हैं। भाई जब ये इक्वल है तो किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे, उसको हमने k मान लिया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 3k/2। b की वैल्यू कितनी आएगी? 5k/4। और c की वैल्यू कितनी आएगी? 4k/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। तो a की वैल्यू कितनी है? 3k, 2 ऊपर चला जाएगा, a² कितना हो जाएगा? 9k²/4। c² कितना हो जाएगा? 16k²/9। और b² कितना हो जाएगा? 25k²/16।
16, राइट। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 निम्न 144, 144, 144, तो 144, राइट। तो 4 से 36, 36 इंटू 9 कितना हो गया, 36 इंटू 9 324 के स्क्वायर, 9 से 16, 16 16 256 के स्क्वायर, 16 निम्न 144, 25 निम्न 225 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36, दैट इज 3 6 जा 12 बाई के, कितना हो जाएगा 12 अपॉन के, 12 अपॉन के। तो यहाँ से के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 324 में यदि हम जोड़ते हैं 256, तो 56 24 80 और 3 580 minus 2 to 5, so it will give you 55 355, so that will be 355 upon 144. तो k will cancel out each other, so we are left with our answer. so अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 144 का स्क्वायर रूट would be 12 and we are left with square root of 355. so ultimately our final answer would be root 355. it is given in the option number B. so hopefully this is also clear to you. Moving to the next question. It is saying the sum of deviation of n numbers from 10 and 20 are A and B respectively. ये क्वेश्चन इसी टाइप का यूपी पीएससी सीसेट में भी पूछा गया था, ठीक है। ये बोलता है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 एंड 20, मतलब हमारे पास दो नंबर हैं 10, एक 20 है, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर्स, ठीक है, तो सम ऑफ डेविएशन ये आपको दे रखा है a, कहाँ से है, फ्रॉम 10, एंड सिमिलरली सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम 20 इट इज गिवन टू यू b, और a अपॉन b की वैल्यू या b अपॉन a की वैल्यू आपको -4 दे रखी है। देन व्हाट इज द मीन, इनका ओवरऑल मीन पूछा है, ठीक है। तो अगर हम डेविएशन की बात करते हैं, भाई मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है लाइक 10 और हमारे पास कुछ और नंबर है, लाइक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो अगर हम इनका डेविएशन करते हैं तो इनका डेविएशन कितना आएगा, 1 - 9 प्लस 4 - 10 प्लस 6 - 10, ऐसे डेविएशन करते हैं। तो इनका ही डेविएशन n नंबर्स का दे रखा है, कितने नंबर्स का, n नंबर्स का। तो यहाँ पे इस बात को समझने का कोशिश करिए कि हमारे पास रेफरेंस नंबर 10 है, रेफरेंस नंबर कितना है 10, तो a would be equals to, if I am taking n numbers x1 x2 x3 and so on and xn, and every time I am taking the deviation of from number 10, तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम इसका डेविएशन करेंगे, आपको सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ डेविएशन करना है फ्रॉम 10 से, तो इट वुड बी x1 - 10 प्लस x2 - 10 एंड अप टू xn - 10। आई होप इट इज क्लियर। तो इनका जो भी सम आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज गिवन टू यू a, नो प्रॉब्लम। तो आई कैन से a वुड बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अप टू xn minus, if I take -10 -10 up to n times, so that would be 10n, that would be 10n. Similarly b should be equals to x1 plus x2 plus x3 up to xn, and again it should be equals to minus of 20n, right, no problem. So if I subtract these two value, minus minus, it would be plus, so these two cancel each other, so we are left with a minus b, and that should be equals to 10n, that should be equals to 10n. So we have the value of 10n equals to a minus b, right. So further if we solve, it is given b upon a equals to minus of 4a, so it's given b upon a equals to minus of 4, b upon a. I can say b should be equals to minus of 4 times a. So a minus of minus 4 times of a should be equals to 10n. So I can say 5 times of a should be equals to 10n. So from here I can say n should be equals to 5a upon 10, or I can say a by 2. So I have n equals to a upon 2, or we can say a equals to twice of n. We have to find the mean. बोले तो sum. We have to find the sum, right? तो मीन कितना होता है, वी हैव टू फाइंड द मीन। तो
So that would be equals to sum of all the numbers divided by the total numbers, right? So from any of the equation I can say x1 plus x2 plus xn, it would be equals to, from this equation I can say a plus 10n, a plus 10n, and total numbers are n. I have already calculated a is equals to twice of n, so that would be equals to twice of n plus 10n upon n, so that would be equals to 12n upon n. So from here I can say the mean is going to be 12, mean is 12. सो होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा. बेसिकली डेविएशन की जब हम बात करते हैं तो हम नंबर्स में से रेफरेंस नंबर माइनस करते हैं, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इट इज ए सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. If mean of the observations, so we have some numbers 12, 1, 8, 54, then 61, then 28, then 45, then 35, then 21, then 17 is m. We have to find the value of 2m plus 5. So to find the median, you should know we have to arrange the numbers in the increasing or the decreasing order, right? So I'm going to arrange in the increasing order. So smallest number would be 1. After that one we'll be having after that one we'll be having 8. After that 17 and 21. Before 17 we have 12, so it would be 12, then 17, then 21, then 28, then 35, then 45, then 54, then 61, right? So median would be the mid value. So I try to cancel from the extremes. So ultimately we are left with 28 plus 21 divided by 2. This would be the median, right? So I can say median would be 49 over 2. We have to find the value of twice of m plus 5, right? So twice of m plus 5. So here the median is 49 over 2 plus 5. So this is going to be 54. So it is given in the option number D. Hopefully it is clear to you. Moving to the next question, question number 11. A very good question from algebra. It is saying how many real roots does equation this have, right? So we have a equation root of x plus 9 equals to x minus 3. One thing you should know, in the square root we cannot have the negative value. In the square root we cannot have the negative value, means x plus 9 should be greater than 0, should be greater than or equals to 0, means I can say x should be greater than equals to minus of 9. So whatever be the value of x, it should be greater than minus of 9, right? So if I square both sides, so it would be x plus 9 and it would be x minus 3 whole square. So this is going to be x square plus 9 minus 6x, x plus 9. So x square, 9 would be cancel out each other. So x square minus ka 6x minus ka x equals to 0. So x square minus 7x equals to 0. So x would be common, x minus 7 equals to 0. So either x would be 0 and x would be 7. So if it is 0, if you will take x equals to 0, so this would be 0 plus 9 and this would be 0 minus 3. So I can say this is going to be root of 9. So 3 cannot be equals to minus 3. So I will not take this as a solution. Most of the students did the mistake. So if x equals to 7, so 7 plus 9, it would be square root of 16 and that is nothing but 4. And similarly 7 minus 3, it would be 4. So both sides are equal. Of course, this is the solution. So it has only one solution. It has only one solution, that is option number 1. Moving to the next question, again an algebra question. It is saying x equals to 97 plus 56 root 3. We have to find the fourth root of x plus 1 upon fourth root of x, right? So it is saying we have to find the fourth root of x plus 1 upon fourth root of x, right? Fourth root of x, right? It means you have to find the fourth root. So if I want to break this number,
x equals to 97 plus 56 root 3. So a square plus b square plus 2ab. So if I compare it with 2ab, so 2 into 28 into root 3, no problem in that. So can I split 97 as the 28 and root 3 something, so that I can have the solution, that is a square plus b square, a square plus b square. So I can say this is going to be 7 square and this is 48, means 49 plus 48. Of course I can say this would be 7 square and 48 is a square root of that is root 48. Root 48 is nothing but 4 root 3. So I can say 4 root 3 ka square. Hopefully you are catching me. It means I can split this number as 2 into 7 into 4 root 3. Is it clear? Means our A would be 7 and B would be 4 root 3. Hopefully it is clear to you. Now, if I want to rewrite actually this number, so please note it down. If I want to rewrite, so I can say this is nothing but 7 plus 4 root 3 square. You can check it out. 49 plus 48 plus 56 root 3. So this is the same number. So I can say if this is the whole square, right? So I can say this is nothing but I have taken the root from both sides. So root x would be equals to 7 plus 4 root 3. So this is the value of root x. Now again I have to find the fourth root, means one time I have to do the square root once again. So again using the same tactics, that is 2 into root 3. So I can split as this is going to be 2 ka square plus root 3 ka square. Again I can say plus twice of 2 into root 3. Same formula, it is whole square. So again fourth root of x would be, that is 2 plus root 3. So hopefully it is clear to you how I got the value of fourth root of root x, right? Now it is very easy for me. अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया. Why so? अब तो रेसिप्रोकल करना है. इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ x. So this is 1 upon twice of root 3, and if I rationalize it, so 2 minus root 3 upon 2 minus root 3 into 2 plus root 3. So that is going to be 2 minus root 3. So this is the value of 1 upon fourth root of x. So hopefully it is clear. I am deleting this, right? Now I have to find the summation, right? Summation of fourth root of x plus 1 upon fourth root of x, and this is 2 minus root 3. So if I add these two terms will be cancelling each other, so we are left with 4. So 4 is the right answer of this question. So hopefully this question is also clear to you. So in the next video we are going to complete the solution of the CDS 2023 question paper. Till then you can give the feedback on this video, and please do subscribe the channel Selection Classes for CDS 2024 revision series. So see you in the next video. Bye, take care.